I mean, I've been around for 12 years now. Everyone thinks कि हिंदी फिल्म तो करी ही होगी. But ये मेरी पहली फिल्म है, and that too with the greatest cast ever. Avan ma'am, it was a pleasure working with her, and then having a female DOP also. So I was like, wow, it was like meant to be. Sorry? What do you mean? Please elaborate. But I think we must also cheer for Pooja, who's the DOP who joined the No, I didn't. Silence. No, it was great fun and everyone was extremely supportive and I'm just very, very happy and grateful that I got this part and ma'am thought and producers thought and everyone thought that I could, do this very, very important and interesting character. And I'm very happy. Every time I interview you, मैं शुरुआत ही इससे करती हूँ कि आप कैसे कर लेते हैं? How do you become everyone's favorite with every character? That's our question. We ask him after every shot. But you saw कैसे कर it. लेते You हैं? observed him. I just I'll take your permission just to say a huge thanks to NSG Studio, Shari Patel, Sivan, and the entire team who is present here. It's been a long journey with them, and also Z5, Manish Kalra, and their entire PR team here. They've always taken great care of me. And yes, we fight a lot. I fight a lot with their team in finding the right way of promoting the film, or finding the right group. But I must tell you one thing: I don't do anything. I just try to be a sincere slave to my director. In this case, Avan Varusha Devans, who has been my friend for many years. Also because Kiran Devans was sitting here quietly. And believe me, no matter how well things go, Kiran will always have some problem there. But the great cinematographer of this country, Garima Yagni, she was super lady, and she was so young, she was so fascinating, she was so hardworking, and usually I don't get into the casting, but I was keeping my finger crossed that they will cast very well for Dinka's role and Parul's role. And the confidence that these two have shown was quite mesmerizing. Parul is going to be quite a surprise in this film, and Dinkar, is going to be so fascinating for the audience. He's coming from theatre, and Parul, the kind of confident lady that she is, I've only been watching her on Instagram. And she's been quite good. I mean, she has to tell me how to do that. But yes, it has been a fascinating journey. I have been only learning to think silence. That's it. दूसरे को हाई फाइव दे रहे थे तो मैंने बोला ऐसे कर तो कुछ समझ में आया किसे समझ में आया मेरे को बहुत पहले समझ में आ गया साइलेंस 2 तक तो आया नहीं है आगे साइलेंस में आ जाए तो But your characters have received so much love. How difficult is it to get back into that soul जिसे बोलते हैं ना, because आप उस character में एक बार फिर कैसे खुद को ढाल सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप दूसरा सीजन या दूसरा एडिशन कर रहे हो, you have to revisit the first part because eventually what happens that there is a gap and you have moved on from there. You have grown as an actor, you have grown as a person. But there is to begin with, just the joy of coming back to this team was boundless. The minute I got the
when? And you know, there are some things about the role, like you also said, which of course you have to revisit. But personally, I felt that there are so many things that beautifully come to you when you're in motion. So your body language from the first film, you know, which is sort of muscle memory, it comes back to you on the second or the third or the fourth day. The camaraderie that we share. I think that bond is so great that the second time around, we were genuinely great friends on the set, and that just made our job easier. So every time we were within a scene, nobody had to worry about breaking the ice or getting to know another. None of that. I mean, I think we were kind of able to bring in that friendship on screen because all of us bonded really well off screen. And this time around, I think we knew Aban ma'am that well, where we kind of know where she's coming from, when we're executing scenes, we know her working style, all of that. I think that really added to it because genuinely this time there was a lot more work. There are so many murders happening, and there's that much more work to do. I mean, we are all on our toes. So yeah, this time I think that friendship helped, but also yes. Not every day you get to hear so many more. The energy on set would be very different. एक bond बन चुका होता है. आप लोग, you know, you're back there with those characters. सबसे बड़ी learning क्या रही? Learning at the set पे Manoj sir used to sit in the center like a sensei, and we used to sit around him, ask him live questions, ask him character questions. He would always have. Don't we all? He always has this. He has intense eyes, and first of all, he looks at you, and then he's like, question seriously पूछ रहा है या मजाक में पूछ रहा है? And then he gauges it, and then he realizes कि नहीं यार, ये दिल से सवाल पूछ रहा है. And then he goes, साहिल, ऐसे करो. And then it happens. Be it live, be it the film, be it anything. He has answers. He's our sensei. So good. Fakhar, आप बताइए, how was your experience and how have you evolved as a person, as an actor, now with Silence 2? See, as Prachi also said, it was not very difficult because हम लोग Silence 1 करके आए थे. So the characters are the same, and we've gelled so nicely in Silence 1. So there was no breaking ice again. We bonded as if जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू किया. We know Aban ma'am's style of direction. Characters, we've already played that character. And for me personally, my biggest kick is standing in the same frame with Mr. BAJPAYEE. मतलब इससे बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता. आप एक complete institution के साथ एक ही frame में खड़े हो, इससे बड़ा मेरी achievement कुछ नहीं है. And it just makes your job very easy when you're working with him. And scripts इतनी डिटेल है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है. आप just be with your character that you played in Silence 1. Continue with that same honesty. And that's it. That's very easy. और हम लोग तो अगर नहीं मॉम में रहते हैं सर से बहुत ही सवाल पूछते रहते हैं कि कैसे कर लेते हैं. I also feel that I didn't say it, but then sense it. You know, I now like to. Manoj sir, silence does not have to be that all dark and sinister word. You have been constantly maintaining in all your interviews that when things were not going right for you, you chose to go inward. You chose to maintain that silence and find that sense of spirituality through silence by going deep within you. When things also get ultra competitive, perhaps toxic, you also chose to do that. Can you please shed light on the same, the significance of silence? आपका राब्ता silence से कितना तगड़ा है? उस पर मैं हिंदी में जवाब दूँ इसको? अच्छा, दो तरीके की चुप्पी. आपने एक बात की चुप्पी दो तीन तरीके की होती है. पहली ये होती है कि जब आप जीवन में आपके तूफान आ रहे होते हैं, मेरा हमेशा मानना है कि बेसमेंट में जाना बहुत अच्छा लगता है कि तूफान घर को लेके चला जाएगा. बेसमेंट में अगर आप रहेंगे तो आपको नहीं छू पाएगा. बेसमेंट का मतलब वो ये होता है कि चुप होकर के अपनी यात्रा को सोचना और देखना कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया. क्योंकि तूफान के साथ में आप छाती खोल के खड़ा नहीं रह सकते हैं. ज़्यादा सही होता है कि आप अपने अंदर झांक के देखें कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया.
और जहाँ तक बात है दूसरे साइलेंस की, तो दूसरा साइलेंस ये होता है कि जब चीज़ें आपके आसपास बहुत ज़्यादा उलझ गई हों, तो आप बात करके उसको सुलझा नहीं सकते। सारे पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देखना होता है और साइलेंटली उसको एनालाइज करना होता है, और तभी जाकर के आप किसी मकाम पे किसी कंक्लूजन में पहुंच। तो वो है लोगों के हेयर स्टाइल। तो सर अगर आप मेरी आर्ट देख पा रहे हो तो कुछ बता सकते हैं कि मुझे किसका हेयर स्टाइल फॉलो करना चाहिए? नहीं, वो पारुल वो चीज़ बेचती है। पारुल 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 वो बालों की वो सारी चीज़ें बेचती है। निश है तो आपने समझ लिया। ओके पारुल, तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू सर, मैं चली जा रही हूँ शेयर और साइलेंस टू देख लेना। नहीं मतलब मैं बड़ी सी, मैं इसको मजाक में कभी नहीं बोलता। कहीं न कहीं सिनेमा यादगार एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। जो पुलिस नाम सुनते हैं सबसे पहले आप लोगों के क्विज मत करना, बजर मत करना, फेल हो जाएंगे सब के सब यहाँ। सब चिकन लॉलीपॉप खाने में व्यस्त हैं। जी सॉरी। तो मैं पूछ रहा था कि आप लोगों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो पुलिस नाम सुनते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट नाम सुनते ही सबसे पहले वो इंसिडेंट याद आता हो आप दोनों से? मुझे सबसे पहले नाम याद, मतलब कोई इंसिडेंट याद आता मेरे जीवन में। देखिए मैं गांव का, तो हमारे गांव में दरोगा साहब जो थे वो सबसे बड़े आदमी हुआ करते। तो दरोगा साहब की अगर गाड़ी हमारे गांव घर पे लगती थी, वो चाहे भले ही चाय पीने आ रहे हो, लेकिन सबसे पहले हमारी फट जाती थी, पता नहीं दरोगा साहब और उनके लोग क्यों आ गए। पुलिस के नाम लोकल हमारे जितने भी दरोगा साहब लोग हैं, वो सब थाने के लोग सब मिलते हैं। एंड आई रियलाइज कि इन लोगों का काम कितना भारी है। लॉ इन्फोर्समेंट किसी भी इलाके में, जैसे मैं ओशिवारा के इलाके में हूँ, तो ओशिवारा की कभी पुलिस स्टेशन में ऐसे ही चाय पीने जाता हूँ, और वहाँ पर पता चलता है कि किस किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं और कैसे कैसे वो लोग डील कर रहे हैं। तब पता चलता है कि इनकी ज़िंदगी कितनी कठिन है, कि अपनी ज़िंदगी, अपने पूरे पर्सनल जीवन को, जो इनका जो व्यक्तिगत जीवन है उसको छोड़ के, उसको त्याग करके कंप्लीटली एक केस पे, पुलिस स्टेशन पे उनको लगे रहना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे ही वो स्टेशन से अपने घर की तरफ गए, बीच से ही उनको बुला लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका पर्सनल लाइफ कितना कितना अफेक्टेड होता है। तो फॉर मी देखिए, जो पुलिस लाइन के लोग हैं, पुलिस वाले जितने भी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। अगर आप मुझे इंसिडेंट्स बोलेंगे कि ये तो यहाँ पे पुलिस वाले ऐसे हुए, वहाँ पे पुलिस वालों ने ये कुछ गलत किया, तो यार वो एक्सेप्शन डजंट मेक द रूल फॉर मी। व्हाट आई नो, जो शुरू करते हुए जो मैंने रिसर्च किया था, कि जो पुलिस वालों की ज़िंदगी है वो एक कमाल है कि पब्लिक में उनके लिए अनग्रेटफुलनेस है, लेकिन उनको दिन रात अपने परिवार के सुख को त्याग करके, अपना सुख को त्याग करके 24 घंटे वो आपके लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को संभालना पड़ता है। तो दिस इज हेल ऑफ अ जॉब जो हम सोचते नहीं। देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस आप जहाँ पे कह सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे पुलिस ने गलत किया, लेकिन देयर आर other 90% instances where you will see what, because of the police department, that we've always been feeling safe. On that note, do you have any other question? Because I'm afraid we've completely run out of time. जी, बड़ा अच्छा लगे। अच्छा लगा आपको? चलिए एक दुकान और खुल गई मेरी। कुछ सोचा उसके बारे में? नहीं सर, मैं तो चाह रहा हूँ कि लोग बुलाएं। मैं पैसे किसको बुरे लगते हैं सर? नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया। मैंने पहली बार किया, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक एंकर के ऊपर होता है कि वो अपने जो गेस्ट आते हैं, जो स्टेज पे आते हैं, उसके ऊपर होता है कि वो सवाल किस तरीके से करे और कैसे करे, ताकि वो जो गेस्ट
right from your very first show, right? People have given you a different level of love, affection, जो कि रहा है आपके साथ, and बीच में people have missed you as well, and जो उसको कहते हैं हम लोग like silence in मतलब that visibility that perhaps a lot of people missed as well. And when visibility is missing, even if there's a lot of quality in the person, people raise questions like मुझे बताओ कोई एक ऐसा instance तुम्हारे professional जिंदगी में where all this silence and all these critics जिन्होंने शायद आपको criticize. That's when you have more fun with it, and since then you've been seeing a lot more of me on screen. So I guess somewhere I'm getting that right. You're already getting that right. Congratulations to you. Thank you. And to all of you, thank you for taking out the time to be here. Super.